تعالى لي. ملوك الصين دي انا ملخصها في سطور، بس مين يقرا؟ فاهم؟ كلام الشارع ده انا هرسه كل المجال حبايبي بروز. وانا كاكازوكو مصدع ايه، القي نظره لو على الحلاوه عندي كاستر بالاسم. عفرت يا عفرت. لا مش مسجل. اخواتي عشان فاهمين السين، سبوتيفاي عمل لك بلاي ليست الاقوى راب مصري، اسمع ملوك السين ببلاش. مع التحديث الجديد لستي سي بلاي، تجربة جديدة للكل.
Hello and welcome to GAMER8 and welcome to day 2 of the PUBG Mobile World Invitational. My name is Banks and I am your host and I am coming to you live from the GAMER8 arena in Riyadh, the capital of Saudi Arabia. Now many of our teams hit the ground running. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आ जाओ फटाफट, जो लोग भी नए और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अभी हम लोग वॉच पार्टी करेंगे आज के दिन। ओके, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भाई साहब हकॉर्डेट करना। गेम स्टार्ट होने वाला थोड़ी देर में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बीच बीच में भाई कास्टिंग भी करते रहेंगे, तो एकदम बिल्कुल प्यार बनाए रहिएगा। We're going to break so many things down. I'm just happy your host here for Pmwi 2022. Hopefully for the next 2 weeks if I don't get my job taken away from me, but I think I'm doing an okay job. Two gentlemen who are doing a phenomenal job though are my analysts, Maxman and Colars that are on the end. Gentlemen, we've had an exciting first day of games. We still have another day of play to come, and even before then, we have a special man to introduce here on this. We have Sir Tandy coming in from Vampire Esports, coach and analyst for the team. First of all, man, welcome to this. Thank you so much for being here. Thank you so much for inviting me here. Oh man, yeah. The thing is, if you do too well today, we're gonna have you back every day. So you don't want to get too good. गाइस, जो लोग भी नए और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थोड़ी देर में फेस कैम भी ऑन करेंगे। ओके, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। We have a bit time to prepare because we just finished the PMPL Thailand and at 11 p.m. and then 6 a.m. we had to fly to here. Oh wow. So we don't have a time to prepare much, but I think my players just they are already ignition the engine from the PMPL, so they can play just like they want to play. To be fair, right, that's kind of the best way to prepare for an event like this is to play another event right before and you're ready to go, right? Go ahead, man. Yeah, exactly. I mean, on the high, it's going so well before you guys so far. But I want to know, like, this is right now one of the biggest offline events we have in PUBG Mobile. How do you and the teams, adapt to this new offline event with all the teams here? I think it's a big pressure to be here because this is the biggest offline event for a long time since 3 years ago, and we have competed the Southeast Asia. आदित्य पे फिनो तुम कास्टिंग करोगे क्या? हाँ, ऊपर से कास्टिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी हम भी। गेम जैसे स्टार्ट होगा तो आप लोग आना मत भूलिएगा और लाइक सब्सक्राइब दबाना मत भूलिएगा। ओके, कास्टिंग करेंगे हम लोग, मतलब ट्राई करूँगा जैसा जैसा सीन होगा। Obviously, game 1 for you yesterday was fantastic. I really enjoyed watching it. What were the most important moments for the team in what was a difficult game, to be honest? Yes, I think it's a really difficult game because the इंडिया PS ब्रो, इंडिया को सपोर्ट करो, देखते हैं क्या सीन होता है। to the circle. But I think the most important thing is अभी आई थिंक गेम स्टार्ट होने में कितना टाइम है? they can get a lot of kills. शेड्यूल के हिसाब से पहला मैच हमारा, ओ भाई साहब, इंडिया के टाइम पे तो दिया ही नहीं है। वो 15 से 20 मिनट में स्टार्ट होगा। Vampire Esports. This is my team style. They have a strong team fight, but if they just stay play really slow, just the diesel engine, they're slow to burn. Just like that. So I think you talked to the right man about it. गाइस, 10 लाइक कंप्लीट करा दो फटाफट। टॉप 5 लाना है एटलीस्ट। यस ब्रो, टॉप 5 थोड़ी देर में फेस कैम भी ऑन हो जाएगा। ओके, सेटअप करने जा रहे हैं। फेस कैम भी स्टार्ट हो जाएगा, तब तक गेम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए तब तक मिलते हैं, लाइक करिएगा। In my team style, we are playing with a circle. Yes. Really slow. Sometimes we are outside the circle for looking for the best position to get in. We will think about it. Oh, this is the old center of the circle. Yeah. They have more opponent than the around. So we are rotating up and down to find the best position. Just like yesterday, on the first game, we can go straight to the Rust Hawk, but we not. We are going up there, lobby the bridge, and then going under the bridge. Just like that. Okay, I feel like I'm going to ruin the fun because talking about the best opening game we've seen in a long time here, I want to talk about game 3, unfortunately, which is the Sandhawk. There was a little bit of an altercation you had with TJB Esports EU, right, when they were leaving Same and you came down from ruins. You definitely felt unprepared on your side on that. Is there like some changes you might want to bring to the table on that? I think the TJB, they are all the, how do you call this, that drop the Sami? Sami. Yes, Sami. to the south, TJB, they play on the Sami, but they made the Nigma. And they leave the city for the Nigma, and then they go forward to us. Yeah.
and we don't have any information because no Q feed, no the sound of the gun, something like that. And the Fluke TH, my player, he just looking for looting for the mid kit. And I think TJB just come only one guy, and it's a miscommunicating about the information. The TJB just come 4, and then after that we driving fast to rotate it around back, and then we don't have information about TJB is around us, and then we die. Yeah, I think you tried to take some production, please. Come on, you're happening even more. Come on, you're TJB in that match. And that's the proof you don't touch TJB's like healing spots, right? Yeah, they're not going to be cool with that one. I mean, you guys definitely then have a plan in mind, then I guess, to avoid that from happening once again, like the next 2 Sandhawks. In the Sandhawk, normally we play just with the mid kit. We are collect around the ruin and then give it to my player to. We have a strategy on the Sandhawk to, just med. Yes, just only med kit for playing because it's easier to get more point at the top 3. Yes. Better than going to fly and we don't know much. And is that also your focus because you got 18 teams in the lobby, right? Is that still your approach this time? Yeah. It's there's a lot of the team around us, so we don't know where they play, where they have. So it's a safe way to play with the med kit, I think. Fair enough. We don't have too much time left with you, but we kind of want to talk about like the teams you're looking out for, but in 2 different ways, right? Going into the event, who are the teams that you were like, okay, these are the real contenders? And then after day 1, who do you think are the new contenders? Are there any new people that you are like, oh, we need to keep an eye on them? Or are there any teams that you expect to do better that haven't done as well? In my mind now, it's STE and the TJB. Because their style and my style is really the same. They play with the slow and rotation and a good team fight together. And it's really hard to fight with them in the early game, so we have to focus on the information too much. Any concern about Falcons? They did pretty well yesterday. Falcon, I think they're really great. They are good, open shot, the first shot, they are so good. But we didn't met them much because of the line move or some kind. I think it's a bit concerned about that. Okay, well, so Teddy, thank you so much for joining us. I do want to give you a quick chance to give a shout out to fans out there, whether you want to do it in English or in Thai. It's up to you. Okay, ก็ขอบคุณทุกคนนะครับฝากติดตามเชียร์ Vampire Esports ด้วยครับ We are the new team to the global competition, so please be support with us. Thank you. Hey, I'm sure you made a ton of new fans out there. Thank you so much for joining us. Thank you. And we wish you guys obviously the best of luck today. Thank you. But let's try to jump into the format of the entire event. If you guys didn't join us yesterday, you might have missed on exactly how things will go. And this is going to be, as we mentioned before, a little bit different. 16 teams no longer happening in this event. It's going to be 18 teams. And we did get to see yesterday in particular how that's affected quite a few different teams here, Max. Yeah, I mean, you saw it with that first game, like Vampire, we were just talking about it. You take a central position like that, they become even more valuable because you can pick up basically so many more eliminations off the back of that. 24 on that first game for Vampire. Yeah. And I also understand, right, we were talking about it right there on the interview. The heal strat just makes also a lot more sense into Sandhawk because there's so much unknown. The fights are so hard to take. Heal strat might even be more valuable now because you're just playing super safe. And if you really want to get down to specifics, I can understand his point about Sandhawk and TJB being kind of aloof and kind of everywhere. You're in Sami, you're in moving kind of up on that west coast as well. It's not easy to know exactly where they are, especially when there's so many teams that you have to account for. So, yeah, it's interesting. It's going to be interesting, right? Because we expected, Nigma Galaxy, we expected TJB to do the heal strat. Didn't expect Vampire to do it. So if they don't have that altercation with TJB, it's going to be a fight between 3 teams for second place. But they all want to loot meds down there, which is the big problem. Not enough. Well, as you can see here, ladies and gentlemen, we do have 2 days of play left in this main tournament. We have today the 12th and, of course, tomorrow the 13th. But next week, the top 5 participants from this main event will be joining the invited teams in the after-party showdown, which is going to be insanely exciting with a couple of new maps. If you haven't looked into it, well, I'm not going to spoil it for you. You're going to find out when we get into it on the 18th. But, gentlemen, I'm honestly excited to see how this will turn out. I mean, imagine... Again, in particular, you have Falcons. If they make it into the after-party showdown against some of the most known teams in the world, like the BTRs, that's going to be a chance for them to really make a name for themselves and, of course, gain a lot of fans. Yeah, it's going to be really interesting to see how they're going to be approaching the after-party. Or haters, I should say. I'm sorry. A lot of fans are haters. It depends who you knock out. It's going to be happening for sure, but I think that should be the main focus. Like, the after-party is going to be $1 million extra of potential prize pool, so it's just W after W if you can perform that. Distributed in an exciting way as well. And a very original way. The fact that R8 is already there as well for the Saudi Arabian fans, and if Team Falcons continues to do as they do, that's awesome for the local fans and awesome just for the region as a whole to show the kind of strength that they're putting out right now, considering
considering what we've seen just yesterday. Yeah, and you can see here we do have a couple of different ways you can earn money, whether it is through the rankings and the $2 million, and of course the MVP, the Gunslinger, Grenade, Master, Eagle Eye, Field Medic. I know, if I'm not mistaken, Eagle Eye, it's an average of your top 2 distance shots. Yes. To see who is the best one. Exactly. I will not calculate it myself. I'll probably use a calculator, but yeah. And also, we saw the... even if you use a calculator, you might get it wrong. We saw the Grenade actually award coming through. Like, who is it from Stalwart that's got, like, an insane amount of nades? I can't remember. I was keeping an eye on the Eagle Eye, and I think top was Eagle Eye, and I think maybe he was even Grenades as well, actually. So yeah, it's one of Stalwart for sure. Yeah, they're doing well. Well, we still have, obviously, a lot to come up today here. I'm going to remind you guys once again, though, about Sony Xperia, the 1V, which created in collaboration with esports professionals and is official smartphone partner here with PUBG Mobile. Make sure you guys check them out. Make sure you guys pick them up. They're actually down here, well, down here, but they're also here on the desk as well. All right, ladies and gentlemen, we're getting extremely close to kicking off our first match of day 2, but I'm going to remind you guys once again with a sick hype video of the teams that will be participating not only today, but in the next 2 weeks. Give it your everything, it ain't no holding back. Time to be the one, best squad, that's a fact. Nobody can stop me when I get in my zone. Take it higher, go from unknown to world known. On another level, competition is in trouble. Putting numbers on the board and it's about to double. We can never fold, we can never break. To be the greatest, we will do whatever it takes. Legendary, feeling like it's my moment. No slowing down now, we can move forward. We got the passion and drive, we stay working. An undeniable team, we on the circle. Bring the fire like a dragon, hunger and the passion. Making history, our energy is everlasting. We're staying on top, team so supreme. Making big moves, the world has never seen. We never fall back, hold our ground where we at. We never fall back, hold our ground where we at. If that doesn't get you hyped, I don't know what will. But before we do hop into our match, I want to once again thank Savvy Gaming Group here for making sure this event can be done and making it possible for all of us at home and all of us here in the arena to enjoy. Now, for you guys to enjoy other things, we have tons of things and tons of prizes to give away. One way you can do so is by changing your social media profile picture to the team that you are supporting and making sure to post on the official channels, as you saw right before this video, about your teams and why you want to see them do well. And you can get some sweet prizes, maybe even a sweet phone. But ladies and gentlemen, we got to start talking about overall standings. We did have one day of play happen. We have had 6 matches out of our 18 total now done and dusted. It's time to check in who's currently sitting at the top. And as you heard us talking to Sertani before, Vampire Esports in first place. They're just looking amazing right now, Vampire. Like that first opening They're game, so like hot right now. They're so hot right now, Vampire. Oh, they're going over there. They're just flapping their wings and like flying in first place currently by a pretty significant margin.
The thing about the top 3 teams right now, we talked about it already extensively, Kalaris, is like this is day 1, mainly focused around Vampire, Stalwart, Team Falcons. These are currently the teams to beat. And there's a small gap that has been created now between 3rd and 4th, but there's still clear potential like for teams below. If they get one good game, they're back in the race. And the important thing that we took away from the fantastic interview actually with Sertani is the fact that, and they realize it too, is that some of these top teams, they're bringing very similar play styles across the board than those 3 teams. They understand that they're taking it slow, steady, playing those edges, playing for the position, and then the kills come, sorry, the eliminations come to them a little later on. Ultimately, he didn't quite mention Falcons in that, but they are doing a similar play style to him just because they're not actually coming in on the same angles. So these 3 teams, they're playing the style well. Whether or not that develops here throughout the next 2 days remains to be seen. We'll keep our eye on it. Yeah, and I think we can all agree that if teams can't start to perform today, if they're not at the top, then you could pretty much kiss it goodbye of them getting into the after party showdown. You have to start making plays right here, right now, if you want to see yourself get through into this. And you know what? We're going to find out if they're going to be able to do so. And if you guys are unfamiliar with the schedule, we'll throw it up on your screens really quickly. We're going to be having 3 Erangels, 2 Miramars, and 1 Sandhawk a day. But that obviously will be changed when we get into our 2nd week of play. But I'm excited. I want to get some quick predictions out of you guys of who you think is going to take the first match of the day for the chicken dinners. I want to see Donuts keep popping off, actually. They had that good first game where it did go a little bit bad at the end because Vampire performed well. They still got himself a chicken dinner later on down the line. So I think Donuts, if they have still a good performance today, they can catch up to the big 3 here. I'm not changing my bets. I'm still sticking with Stalwart all the way. I think they're an obvious one. Amazing team. And I do think eventually at the end of this, they will stand head and shoulders above the rest. So I'll go with them. Well, I want to see Damwon Kia step up today. We got to see them do so well when it came to PMGC, and obviously they do have every opportunity to do so. But as you can see here, the players are getting ready, we're getting ready, and hopefully the commentators are getting ready because it's time to head into our first match of the day. As you saw, it's going to be over on Erangel. We need to see a massive 39-point game out of Falcons. Yes, sir, not Falcons, sorry. Out of Vampire Esports yesterday. I should correct myself on that one with 24 eliminations. The question is, can they do it again? And the gentlemen, they're going to bring you all the action here in this first match. It's going to be Avenger and 7 Worlds Gaming. Thank you so much, Jason and the desk. And what a fantastic interview as well we were able to have with Vampire. That was so great to see. And of course, we're getting ready with the first game. 7. It's great to be here. Great to start. And we have the opportunity to do your favorite map. Yes, we will. Don't get me too excited until... just give me some time, okay? Give me some time. The build-up. Yeah, the build-up's going to be great for Sandhawk. But what I was going to tell you is, with Vampire Esports, something that their analyst and coach was just able to say is how they're going to be looking out for STE. They're playing, STE especially is playing really slow, and they are playing their game, and now they are starting to be consistent again, finishing off the day with the chicken dinner. Can STE continue that kind of performance here today on the first map, or are we going to be seeing an STE that we kind of saw between match 4 and match 5? Match 4, to refresh your memory, 15th place, 0 elims. Match 5, 9th place, 7 elims, which was great because they were able to make up so many points there with the eliminations. But I'm intrigued to see what kind of ST we're going to be looking at. Yeah, exactly. Now we're just taking a look at how the first circle is going to be popping up for us soon after the plane path. We're starting over to Stalper and going down to Primorsk. This eliminates
it's a lot of potential drops in Milta Power, Prison, Shelter, Farm. Novo is going to be hard to get to. Military is going to be hard to get to here, which is going to be really, really interesting, of course. First game of the day. I'm super excited to get things started here, 7. And obviously, highest damage also checking in on action. Mike Flug also in there. But right now, Stalwart Esports is really paving the way in multiple ways. Yeah, and with Stalwart Esports, I mean, as I just said, getting that chicken dinner to finish off the game put them in a great place to hunt down Vampire Esports, and hopefully they will be able to continue to do that because it's going to be a battle between these two. But then you heard Jason say a team that actually surprised us was Falcons. This was a team that just kind of came out of nowhere. Falcon Esports decided to stand off for the PMWI packs, get a set straight away, and have 5 chances to draw PMWI treasure chest. Yeah, and that's a further sale on the PMWI packs, and you can get 6 chances to draw the treasure chest from PMWI. Wow, what I'm going to be looking at here is, I mean, I would like to see some of the bottom teams. I mean, Virtual Gaming Squad, this was a team we saw a little bit like they didn't know what they wanted to do yesterday. I forgot which map it was exactly, but they weren't sure. तो गाइस गेम की यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी, देखते हैं कहाँ पे प्लेयर्स किस प्रकार से यहाँ पे आतंक बरसाते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखना पड़ेगा, धीरे धीरे से ये जोन के अंदर यहाँ पे प्लेयर जाना शुरू कर चुके हैं। Okay. Whether it's aggressive or defensive, as long as everybody is on the same boat, that's what I want to see. Yeah, especially Okay, I think team यहाँ दिखाई दे रही, देखना पड़ेगा किस प्रकार परफॉर्मेंस दिखाते हैं प्लेयर्स। Okay. Getting the eliminations that they were for, or super heavy focused on getting the placements, trying to stay 4 alive as long as possible. Obviously, if you are in a 4 versus 3 situation, you're the team with 4, you have the upper hand just by nature, by that. So that's the very hard focus. One of the teams that did that obviously was Donuts. We saw their game on a wrangle. They were able to hold on the barn, just needs to Pachinki, and then move out and then take over control of the late game, which was very good to see, of course. Yeah, and you're talking about Ergo. They ended up getting the chicken dinner, right? Yeah, on top of that, they ended up the first game, 4th place, 8 Illims. So far, Ergo has been working for them. Can they continue on this trend? And I mean, same with Vampire Esports. I know we've been talking about them, but I want to talk about them a little bit more because their damage is just out of this world. I think it's almost more than 2K damage than the other team with that 2nd place damage, which is going to be Donuts. To put it into context, Okay. damage dealt from Vampire Esports, 9,503. Donuts in 2nd, following them, it's at 7,600. ओके फिलहाल हम मिलिट्री बेस पे यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं क्या यहाँ ओके मिलिट्री बेस पे यहाँ पे प्लेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी कोई टीम यहाँ फिलहाल नहीं आई है, तो एक सेफ ड्रॉप लिया गया सभी टीमों के द्वारा, यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे टीमें यहाँ पे लूट करेंगी, उसके बाद भाई साहब यहाँ पे बहुत उतारेंगे बंदों और एनिमीज़ का, तो धीरे धीरे ही सही। बट यहाँ पे और के स्क्वाड के दिखाई दे रहे हैं, ये देखना पड़ेगा कौन से कंट्री से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे हमारी टीम। एक सेकेंड हमें देखना पड़ेगा। आई थिंक साउथ कोरिया की टीम है हमारी डॉग। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से इनका परफॉर्मेंस रहेगा। एक अच्छा खासा एरिया को अभी तक होल्ड किया है। सर्कल के अंदर की बात करेंगे, यहाँ पे सर्कल यहाँ पे बहुत ही जल्द सिंक ले चुका है और सेकंड सर्कल में हम लोग यहाँ पे प्रवेश करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा यहाँ पर साउथ कोरियन यहाँ पे प्लेयर्स किस प्रकार से यहाँ पे टेक डाउन करेंगे फाइटों में। जल्द ही हमें फाइटें यहाँ पे इनिशिएट होती हुई दिख सकती है। जॉर्जिया पुल की बात करेंगे, जॉर्जिया पुल में भी यहाँ पे हमें प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, अभी लूट कर रहे हैं धीरे धीरे सही। बट यहाँ पे आगे की ओर जाना चाहेंगे, जोन के अंदर जितना ज़्यादा रहेंगे, जितनी तक सेफ रहेंगे, जितनी ज़्यादा 4 प्लेयर्स यहाँ पे एडवांटेज रहेगा सर्कल के अंदर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिलहाल यहाँ पे आगे चल के हमें अभी कोई फाइट लेने के चांसेस नहीं यहाँ बनने, क्योंकि सभी प्लेयर सेफ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा पीछे चल रहा है हमारा गेम। ओके टीम सोल हमें देख चुकी है, सोल गॉबलिन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनका UMP 45 और यहाँ पे सेकंड गन कौन सी देखना पड़ेगा। लूट चल रहा है, अभी लूट होगी उसके बाद ही भूत उतरेगा सामने वाले प्लेयर्स का, उतारेंगे साथ में। देखते हैं किस प्रकार से आज परफॉर्मेंस रहेगी टीम सोल की। यहाँ पे M4 भी है फुरस के साथ, यहाँ बवाल और भाई से बुरा हाल कर सकते हैं कभी भी यहाँ पे किसी भी टीम का। टीम सोल के आसपास अभी कोई फिलहाल टीम नहीं दिखाती। ये मुझे आई थिंक यहाँ पे
पुचंकी के ऊपर जो यहाँ पे रहता है पोटैटो हिल के आसपास की जगह लग रही है, वहाँ पे प्लेयर्स रहेंगे हमारे बैक टू बैक यहाँ पे। तो देखना पड़ेगा ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके टीम आई थिंक यूएसए या फिर यहाँ पे मलेशिया में से कोई एक कंट्री है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। ये टीम वहाँ को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएगी। पर एसटी की बात करेंगे, एसटी आई थिंक फाइट में, और टीम हमारे सोल 13 पोजीशन पे 28 पॉइंट। और पाकिस्तान की टीम की बात करेंगे, वो यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे टीम सोल से आगे है कि पीछे देखना पड़ेगा। यहाँ पे टीम सोल अभी यहाँ पे 15 पोजीशन, कोई भी कैजुअलिटीज आई थिंक अब देखने को मिली नहीं है। यहाँ पे चांसेस रहेंगे यहाँ पे। ओके सर्कल की बात करेंगे, सर्कल देखते किधर तरफ शिफ्ट लेता है, चांस देखते किस टीम को मिलने वाला है। हाईएस्ट डैमेज एक्शन, माइक और फ्लूक। ओके 1 और 2 इरेंगल के मैप में टॉप 3 प्लेयर्स हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं हाईएस्ट डैमेज के। ओके सर्कल धीरे धीरे से प्लेयर देखते हैं टीम्स यहाँ पे कैसे रोटेशन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे जोन के अंदर जाके। तो गाइस जो लोग भी ना यार फटाफट लाइक करना, शेयर करना। ओके पहली फाइट हमें स्टार्ट होती हुई दिख रही है। देखना पड़ेगा किस प्रकार परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और डॉग दिखा देगी साउथ कोरियन टीम है, उनके सामने हमें दिखाई दे रही है यूएस की स्क्वाड। यहाँ पे देखना पड़ेगा किस प्रकार से परफॉर्मेंस दिखाते हैं यहाँ पे चल के। तो फिलहाल यहाँ पे चांस पे डांस करना पड़ेगा। ग्रेनेड जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या टेक डाउन किया जाएगा उनके द्वारा? नहीं, फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ खास कनेक्शन उनको सामने टीम को मिला नहीं है। बट यहाँ पे देखने को मिलता हुआ यूएसजी की यहाँ पे डॉनट्स की बात करेंगे। डॉनट्स यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। एक और ग्रेनेड, ओके मॉली खेली गई, ये मॉली की होली, बट यहाँ पे फाइनली टेक डाउन नहीं किया गया। चांस रहेंगे, देखना पड़ेगा किस प्रकार परफॉर्मेंस दिखाते हैं यहाँ पे। चांसेस रहेंगे, दोनों टीम यहाँ पे धुआंधार प्रहार करने की तैयारी कर चुकी है। अनाड़ियों के प्रो खिलाड़ी देखने के बाद फिलहाल सर्कल भी हमारा क्लोजिंग करना स्टार्ट होने वाला है। तो देखना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा यहाँ प्लेयर्स को जल्द। फिलहाल एक और फाइट में देखने को मिलती है, VGS की स्क्वाड दिखा देगी, यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे चांस रहेगा डाउन किया और कंफर्म भी करेंगे। इसी के साथ AKM का साथ तो भाई साहब बिल्कुल होगा विकास, और भाई साहब गोलियों के बरसात होने वाली। इसी के साथ यहाँ पे एक्शन में आते हैं, फैल्कन के भी स्क्वाड एक्शन में आ चुकी है और टेक डाउन किया जा रहा है उनके द्वारा भी। तो चांसेस रहेंगे यहाँ सभी के पास। फैल्कनर्स की बात करेंगे, वो भी रेडी होंगे। VSG भी यहाँ रहेगी, वर्चुअल गेमिंग यहाँ दिखा देंगे स्क्वाड। यहाँ वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड यहाँ पाकिस्तान की टीम आएगी और भाई साहब बाहर का रास्ता दिखाएगी और लॉबी में पहुँचा सकती है बहुत जल्द। कवर फायर कहाँ है, कवर फायर नहीं आ पाएगा और भाई साहब बचाया नहीं जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से आगे की, तो आगे की तरफ यहाँ जाते हैं। एक सऊदी अरब की टीम फैल्कन हमें देखने को मिलती है। स्टारवर्ट मंगोलिया की है। वेम्पायर की बात करेंगे, बॉस गेमिंग हमारी चाइना की आई थिंक टीम है फिलहाल यहाँ पे। मलेशिया के 4 राइवल्स रहेंगे। तो यहाँ पे डे 2 का सेकंड गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है। VSD की बात करेंगे, उनके पास मौका रहेगा, कितना देखना पड़ेगा सर्कल के अंदर किस प्रकार से जाते प्लेयर्स को यहाँ पे थोड़ा कैपिटलाइज करना पड़ेगा और भाई साहब डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे चांसेस लेते कि नहीं ले पाते, वो देखने वाली रहेगी बात। ओके एक यहाँ पे हम बात करें, जॉर्जो हिल पे टीम्स आ चुकी हैं। देखना पड़ेगा यहाँ पे ग्रेनेड जा सकता है और यहाँ पे काम तमाम किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा बचेंगे। लोंडे लपाड़ी यहाँ पे तैयारी कर चुके। वेम्पायर स्पोर्ट्स के बाद एक और ग्रेनेड यहाँ पे खोलते हुए क्या यहाँ धागा खोल पाएंगे सामने वाली टीम का? कनेक्शन अभी आई थिंक कुछ खास मिला नहीं, यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चांस लेना पड़ेगा। आप देखना था क्या यहाँ पे एग्रेसिव स्टांस दिखाने वाली टीम नंबर हमारे, देखते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं। फिलहाल फॉल बैक कर सकते हैं वेम्पायर। फिर फ्लूक की बात करेंगे, आई थिंक फॉल बैक करते हुए नज़र आ सकते हैं यहाँ पे। तो चांस देखते हैं किस प्रकार से होता है। फिलहाल यहाँ पे जोन भी स्टार्ट हो चुका है, तो जोन का कंट्रोल किसके हाथ में होने वाला है? आई थिंक टीम सोल के पास एक अच्छा मौका रहेगा। टीम सोल में वाटर सिटी के पास दिखा दे सोल, अक्षत और हेक्टर यहाँ पे दिखा दे। अभी तक कोई भी कैजुअलिटीज देखने को मिली नहीं है, तो यहाँ पे चांस रहेगा उनके पास। बॉस गेमिंग आसपास मुझे दिखाई दे रही है। टीम सोल पे क्या यहाँ पे पंगा लेंगे और भाई साहब क्या दंगा करेंगे और किस प्रकार से नंगा करेंगे, वो देखने वाली रहेगी बात यहाँ पे। तो देखते चांस फिलहाल सर्कल की बात करेंगे, सर्कल यहाँ पे सिर्फ ले चुका है और यहाँ पे किसके पाले में गया देखना पड़ेगा जरा सा। कि मॉर्फ की स्क्वाड दिखा देगी। सर्कल यहाँ पे मॉर्फ के आसपास दिखा दे रही है। अच्छा खासा उनके पास एरिया रहेगा खेलने के लिए, प्ले आउट करने के लिए। बट देखते हैं किस प्रकार से पहुँच दिखाते हैं। ऑलरेडी वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड के एक प्लेयर टेक डाउन किए जा चुके, टीम फैल्कन के भी डाउन किए जा चुके हैं, तो उनके पास भी यहाँ पे ऑलरेडी वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड के
least. You guys are currently in 16th place, and then it's a team that I expect a lot more, especially with the new players set and Texa. We saw some flashes of greatness. The compounds जहाँ पर पहले ही आगे दो players मौजूद होंगे, with the Excel की टीम यहाँ पर push कर रही है, and they can pick up a good number of kills, और वही हमें करती हुई नजर आएगी। लेकिन TJB, real estate, oh my goodness, इतनी बेहतरीन real estate जो है वो ऑफर कर दी जाती है TJB को, and TJB के एक player आउटसाइड कंपाउंड में आएंगे और बाकी टीम जो है वो कंपाउंड के अंदर पुश कर जाएगी और वहाँ पे किया जाएगा। आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, आपको ये बात ध्यान से रखनी है कि आपके बैक साइड जो एरिया यूनिट्स है वहां से कोई टीम आती है, जब तक आपके करीब नहीं आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बिकॉज़ तो साउंड आप सुन सकते हैं, बट तब भी आप ओपन में आकर डैमेज देने की कोशिश करेंगे, ऐसा हो सकता है कि ट्रांजिशन पार्ट में आपके ऊपर नोच पड़ जाए। ओके, यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या चांस लेंगे। बॉस गेमिंग इन द एक्शन, लेट्स सी। बहुत खूबसूरती के साथ एक मिनट गाड़ी के नीचे देते हैं, दूसरे मिनट में यहाँ पे जब वो और बॉस गेमिंग के प्लेयर के साथ भी वही होता है जो की तरफ से किया जाता है। सेम थिंग हैपनिंग ऑन बोथ द साइड्स। टीजेबी एक प्लेयर लूज करती है, बॉक्स गेमिंग अपने दो प्लेयर्स यहाँ पर ऑलमोस्ट कमा चुकी है। बिल्कुल बॉक्स से प्लेयर नॉक है, उनको रिवाइव किया जा रहा है, लेकिन इसी सारे के दौरान दाजू की अगर बात करें उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो इस पुश को रोके। लेकिन दूसरी तरफ दाजू की तरफ से नॉक किया जाता है यहाँ पर जायो को, दाजू को यहाँ पर टिंग की तरफ से नॉक करते हुए, लेकिन टिंग यहाँ पर दाजू का किल कंफर्म भी करेंगे। बाकी दो प्लेयर्स बॉक्स के इसमें उनको भी वीके की तरफ से भी डैमेज पड़ता हुआ जायो को रिवाइव दे दिया जाएगा। एंड लिन इस सारी सिचुएशन के अंदर कवर फायर देते हुए नजर आएंगे। जैसे ही जायो एक दफा फिर से अप होते हैं, टीम जो है वो रीग्रुप होगी और अपने आप को रिपोजिशन करेगी। लेकिन हेवी को बॉक्स के ट्विस्ट में फाइनल सर्वाइविंग प्लेयर मूव करते हुए जाते हैं क्लोज टू द शूटिंग रेंज शटर एंड स्ट्रेट मूव करते हुए जाएंगे टुवर्ड द सवर्नी, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छा फैसला नहीं रहेगा उनकी तरफ से। एंड ये चीज उनको नजरों में लाती हुई नजर आएगी। लेकिन बैक टू बैक फाइट चलती हुई, स्टॉलवर्ट वाइल्डकैट्स दो प्लेयर्स डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। सामने दो प्लेयर्स रहते हैं, हेवी गो 2v2 इवन सिचुएशन बनती हुई। स्टॉलवर्ट वाइल्डकैट्स वीवो कीड को एक झटके के अंदर फिनिश करते हुए और इसी के साथ अपने लिए 4 एलिमिनेशंस अपने बैक में डालेंगे। वीवो कीड बिल्कुल उनके लिए ये चीज सरप्राइज से कम नहीं रहती। लेकिन दूसरी तरफ लुक एट एनजीएक्स, निग्मा गैलेक्सी काफी ज्यादा डैमेज देती हुई नजर आती है। टीम टीडब्ल्यूजी क्या तो जो यहाँ काफी टीम जहाँ पर फाइट में जूझती थी, फाइट का सिलसिला यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा है। सोल के बिल्कुल सामने मौजूद है वेम्पायर स्पोर्ट्स, ग्रेनेड यहाँ पर जाता हुआ स्पेक्स की तरफ से हेक्टर के पास ग्रेनेड जाएगा। हेक्टर काफी डैमेज खाते जरूर है, लेकिन काउंटडाउन हो गए इस वक्त वो इंतजार करें कि उनके एंगल में को प्लेयर आए, लेकिन रैंडम फाइट के अंदर डैमेज पड़ता हुआ काफी लोग यहाँ पर उनको नॉक करते हुए नजर आते हैं। पहला नॉक यहाँ पर सोल की तरफ से भी, लेकिन इस 7 बैक इंचार्ज आती है। टीम सोल यहाँ काफी डैमेज खाती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये 7 वर्ष भाई साहब टीम सोल का पंगा हो चुका है, एक लास्ट प्लेयर बचा हुआ है, देखते क्या टेक डाउन कर पाएगा। हो क्या है इस पूरी लॉबी के अंदर, लेकिन A7 के चोको आगे बढ़ते हैं, गाड़ी के नीचे देना चाहते हैं अपडेट को रिबिल ब्लॉक के बिल्कुल करीब जाते हुए, लेकिन स्टेलेट की तरफ नेट्स भी फेंके जाते हैं। और यहाँ पर अगर वापस है विकेट और इस फाइट के अंदर इस्तांबुल वाइल्डकैट्स की एक्सरे वो वाहिद प्लेयर थे जिनके पास 4 किल्स आते हैं और एक 1v4 किया गया उनकी तरफ से था, उनको हम जरूर देखें। लेकिन A7 इस फाइट में बिना किसी किल के लिए फॉल बैक करते हैं, रिच को छोड़ते हैं, वहीं पर वेम्पायर स्पोर्ट्स को भी इस वक्त फॉल बैक करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली नॉक को रिवाइव देने की कोशिश जो वो की जाती है एंड रिवाइवल आता है। ही सर्वाइव्ड नॉट अनफॉर्चुनेटली बल्कि फॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा। वहीं पर टीजेबी टोंग जापाओ जिस तरह से मैंने पहले भी बात की थी, जिस पर वो मौजूद थे उस चीज़ को अबैंडन करना पड़ेगा, तो न्यूज़ बहुत खतरनाक है। वही होता है, एक पर लूज करने के बाद टोंग जापाओ फॉल बैक करती है और उनकी तरफ से उन कॉम्पाउंड्स को ही अब अपना मस्टन बनाया जाता है। लेकिन बात करेंगे DenizBank Wildcats की, जो कि फिर से फाइट के अंदर जब वो आना चाहता है, रिवाइवल्स हो चुके हैं, तो प्लस उनके नॉकडाउन था, लेकिन दोनों को मिल जाएगा। फिर से कोशिश की जा रही है कि अब कहीं ना कहीं जब वो करंट फाइट के अंदर घुस जाए और दिल हम देख भी सकते हैं बीजेस के ऊपर इस पर उनका कहर जो वो बरसता हुआ और बीजेस के आई शॉट को नॉक करके इंस्टेंट एलिमिनेशन भी दी जाती है उनकी तरफ से। बिल्कुल आई शॉट एलिमिनेट हो जाते हैं, बीजीएस एक और प्लेयर लूज करती हुई डाउन टू 1 स्टैंडिंग हो जाएगी। स्टॉलवर्ट वाइल्डकैट्स आज के दिन पूरी तैयारी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से फाइट्स ले रहे हैं, कंप्लीट फाइट करते हैं, जल्दी से अपने आप को रिपोजिशन करते हैं, थर्ड पार्टीज को अवॉइड किया जा रहा है पूरी तरह से उनकी तरफ से। एंड ये चीज़ जो है वो उनकी मैं समझता हूँ कामयाबी के अंदर एक और जो है वो मैं समझता हूँ कि ऑप्शन ऐड करती हुई जरूर नजर आएगी। लेकिन स्टॉलवर्ट वाइल्डकैट्स सर्कल के अंदर जाते हुए उस साइड के ऊपर जा चुके हैं जहाँ पर
सोल के साथ साथ टीम 87 के प्लेयर्स मौजूद है। टीजेबी भी क्लोज विसिनिटी के अंदर मौजूद है और टीजेबी के साथ एक पॉसिबल फाइट बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन 87 जो कि थोड़ी देर पहले वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के ऊपर अपना कहर ढाती हुई नजर आ रही थी, सामना उनका आईडब्ल्यू के साथ हो जाता है और दिस टाइम अराउंड काफी ज्यादा डैमेज भी देते हुए नजर आए। स्मोक्स करके उनकी तरफ से विजन डिनाई किया जाता है प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्लोज इन करना है इस्तांबुल वाइल्डकैट्स को, बिकॉज सर्कल जो है वो यहाँ पर एटोन एक्सपोर्ट्स जो है वो उनके पास मौजूद रहने वाले, लेकिन पोजीशन सेना को पता लगती भी आई बिलीव लक्स यहाँ पर कर चुकी है, उन्हें कोशिश किया जाएगा उनकी तरफ से प्लेयर सामने मौजूद रहेंगे, लेकिन स्मोक्स को लेकर अनश्योर है थोड़े से यहाँ पर प्लेयर कि वेदर यहाँ पर वो स्पॉट हो जाएंगे या फिर सिचुएशन जो है वो उनके लिए जो है वो साबित होती हुई अच्छी साबित होती हुई नजर आएगी, लेकिन सेना को यहाँ पर नॉक किया जाता है पुश करते हुए सर्कल के अंदर। इस्तांबुल वाइल्डकैट्स एक बार फिर से एक किलिंग स्पीक के ऊपर जाते हुए एटॉन अपना एक और प्लेयर लूज करते हुए ब्रूनो सामने जो है वो एक सरप्राइज बन सकते हैं टीम इस्तांबुल वाइल्डकैट के प्लेयर के ऊपर, लेकिन ब्रूनो को भी यहाँ पर डेफो की तरफ से टेक डाउन किया जाएगा। एटॉन एक और किल यहाँ पर कंफर्म करती हुई, लेकिन फाइनल प्लेयर चोको मौजूद रहने वाले हैं। चोको इज द ओनली सर्वाइविंग प्लेयर जिनके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी है कि एटॉन के बाकी दो प्लेयर्स को भी अप करें और साथ ही साथ इस फाइट को भी कंक्लूड करें, लेकिन इस्तांबुल वाइल्डकैट्स अलाउ नहीं कर रहे सारी सिचुएशन और प्लेयर को भी यहाँ पर फिनिश कर दिया जाएगा एंड इट्स अगेन डाउन टू चोको, और चोको को भी टेक डाउन करने के बाद इस्तांबुल वाइल्डकैट्स अपना दूसरा सक्सेसफुल जो उनका स्क्वाड वाइप है वो अचीव करते हुए और इसी के साथ दो टीम्स को विद इन नो टाइम इस टीम ने एलिमिनेट कर दिया। बिल्कुल जी, कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है वो हमें नज़र आ रहा है टीम आईडब्ल्यू के अंदर, और एक प्लेयर का वल्नरेबल करना कहीं ना कहीं टीम को जो है वो ना सिर्फ नहीं बख्शा बल्कि उनको कॉन्फिडेंस भी दे रहा है और वो फाइट में बार बार जूझ रहे हैं। लेकिन वहीं पर बात करेंगे टीम सोल की, जहाँ पर हमने उनके बचे हुए प्लेयर को देखा, गॉब्लिन यहाँ पर अकेले सर्वाइव कर रहे हैं और कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता, वक्त ही बताएगा। वहीं पर आप बात करते हैं यूएससी की, कल के दिन से हम देखें उनका जो एक गेम प्ले है वो बड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है, वो फाइट्स में जूझ नहीं रहे, वो इंतजार करते हैं कि आसपास की जो भसड़ है वो खत्म हो जाए, वो मच जाए, वो गदर जो है वो बर्पा हो जाए, उसके बाद वो कहीं ना कहीं से एंट्री लेते हैं और बड़ी आसानी से बड़े आराम से जो उनकी तरफ से सर्कल में एंट्री लेकर फाइट लेने की कोशिश की जा रही है, वो भी एंड मोमेंट पे एक काफ़ी अच्छा प्ले साबित होता है। किल फील्ड में देखें तो फाइनली डेनिसबैंक वाइल्डकैट्स की जो डोमिनेशन थी उसको फुल स्टॉप लगाया जाता है, उनको एलिमिनेट किया जाता है इस बात से। और ओके, टीम सोल आई थिंक एलिमिनेट अभी तक हुई नहीं है क्या? बात करेंगे यहाँ पर वो इस वक्त स्पोर्ट्स की कहर में आते हुए और ग्रेनेड्स का जो एक तबादला है वो किया जाता है, ग्रेनेड्स फेंके जाते हैं वेम्पायर स्पोर्ट्स की तरफ से, और टीम PUBG स्पोर्ट्स के दो ही प्लेयर्स बचे थे जिनमें से एक को नॉक किया जाता है, फिर से एक डिफरेंट साइड से स्प्रे आता है, अब आखिरी प्लेयर बचे हुए, लेकिन टीम सोल लास्ट में स्टैंडिंग, देखते हैं कहां तक जाती है। फंस जाती है, एक सैंडविच उनका बन जाता है और हमने लाइव जब उनका सैंडविच खाते हुए देखा बहुत सारी टीम्स को। ओके, टीम सोल एलिमिनेट हो चुकी है हमारी। लेकिन एसटी के बिल्कुल सामने फिर मौजूद आखिरी प्लेयर के 1v1 बनता हुआ यहाँ पर विकास डैमेज देते हुए बगी को 1v1 नहीं कहूंगा मैं इसको, बल्कि एक प्लेयर यहाँ पर जो बगी को डैमेज देते हुए नजर आ रहे थे, और इंस्टेंटली यहाँ पर जो किल कंफर्म करके एसटी अपने बैकपैक में दूसरा किल सिक्योर करती हुई नजर आती है। यहाँ स्पोर्ट्स के पास जगह अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो अगला सर्कल बनता है तो रोटेशन करने में इतनी बुरी तरह से मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे नाकाम होते हैं कि पूरी टीम ही एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन चलें, फिलहाल 12 टीम अभी भी जिंदा है और 28 प्लेयर्स हमारे सामने फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा टीम नुकसान उठा चुकी हैं, अपने एक दो प्लेयर्स लूज़ करती हुई नजर आ चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ निग्मा गैलेक्सी भी इसी के साथ दम तोड़ती हुई नजर आएगी और रैंगल जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर किसी को बख्श नहीं रहा, जो है वो सारी सिचुएशन के अंदर टीजेबी के लेन अभी सर्वाइव करते हुए जायो बेहतरीन सर्वाइवल इन प्लेस की तरफ से देखने को मिल रहा है, लेकिन नेड आता है और ये नेड भी यहाँ पर फिनिश करता हुआ, लेकिन 4 राइवल्स दूसरी साइड के ऊपर बैक टू बैक को फिनिश करते हुए भाई साहब टीम सोल एलिमिनेट हो चुकी है, फिर से देखते हैं नेक्स्ट गेम में क्या यहाँ पे कमाल करेंगे। अभी तक के लिए इतना कोई बुरा मैच उनका नहीं किया, अर्ली एलिमिनेट तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अपने लिए कुछ किल पॉइंट्स लेकर जाते हुए नजर आए, लेकिन स्टारवॉर्ट ईस्पोर्ट्स नाउ दे आर कॉर्नर्ड बिकॉज अब उनकी पोजीशन के ऊपर 3 से 4 टीम्स की नजरें रहने वाली हैं और मुझे जो है वो यहाँ पर जो है वो हर टीम की नजरें जो है यहाँ पर एसटी की पोजीशन के ऊपर रहेंगी, लेकिन जिस तरह से हमने हाइलाइट्स के अंदर देखा, एक छोटे से रिप्ले के अंदर देखा, टीजेबी के प्लेयर एक प्लेयर बिल्कुल स्कोप करके 2 प्लेयर्स को उनकी तरफ से हेड्स जो हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं। मैं कहूँगा कि आर्टिस्टिक स्प्रे था, ऐसा नहीं है ना पे एक उनके जो क्या कहते हैं उनसे जी जी
बिल्कुल एंड अगेन आपने एक चीज नोट की होगी कि सबसे पहले उन्होंने ड्राइवर को डाउन किया है, देन ही वेंट फॉर द गाय जो कि और साथ वाले जो थे वो बड़े आराम से इंतजार कर रहे थे कि शायद फर्स्ट चांस। बिल्कुल कोशिश जो है अगेन की जाती है, लेकिन 4 राइवल्स अपने आप को बेहतरीन जगह पे रिपोजिशन करने की कोशिश के अंदर आरएसजी के साथ सामना करेंगे। आरएसजी के लाइफ काफी लो एचपी रहने वाले, लेकिन आरएसजी के प्लेयर यहाँ पर डाउन होते हुए आरएसजी के ऊपर पुश एक दफा फिर से 4 राइवल्स का जाता हुआ वो की डाउन भाई है। साहब 2v3 सिचुएशन 2v2 ओके के 1 अंदर 2 3 6 टीमें और बची हैं यहाँ पे। इजी रहने वाले यहाँ पर और कौन सी टीम चिकन डिनर लाने वाली है गाइस बताना मत भूलना। यूएसजी के स्क्वाड के प्लेयर नॉक पड़े हुए हैं। एक बार फिर से नॉक डील किया जाता है डीडी की तरफ से। डीडी फॉरवर्ड, डीडी को अभी तक क्लीन पोजीशन का आइडिया नहीं रहने वाला है। M249 उनके हाथ में रहेगी। एनईसी के साथ जैसे ही उनको पोजीशन पता लगती है प्लेयर डाउन होते हैं नेड के साथ। प्लेयर यहां पर नॉक होते हुए मॉर्फ स्पोर्ट्स के नेड के साथ, लेकिन इसी के साथ टीम आरएसजी इस सारी सिचुएशन के अंदर सरवाइव करती हुई नजर आएगी। डीडब्ल्यूजी के जूनी भी सरवाइव करें जो कि एसटी के लिए कुछ मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश करें, लेकिन एसटी के एक प्लेयर यहां पर नॉक, एक प्लेयर फिनिश, डाउन टू 2 मैन स्टैंडिंग। टॉप इज आल्सो लो ऑन एचपी, लेकिन जूनी यहां पर स्पॉट हो जाएंगे और एक्शन अपने लिए ये किल अपने बैकपैक में डालते हुए। लेकिन दूसरी तरफ यूएसजी को गाइस जो लोग भी नहीं और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना फटाफट। टीम सोल सपोर्ट करने वाला टीम सोल फिलहाल एलिमिनेट हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन ये हार्ड कवर उनके लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकता है। बिल्कुल सर्कल के रहमो करम पे ये हार्ड कवर रह चुका है और एसटी को देखिए आपकी उस खूबसूरती के साथ अभी तक अपने टीम पे जिंदा रखे हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली कवर नहीं है उनके पास। स्मोक स्प्रेड होते ही उनकी 15,000 हो चुका है मैं कहना चाहूंगा अभी नहीं यार बिल्कुल सेटिंग करना पड़ेगा लग रहा है। लेकिन टीम आरएससी आहिस्ता आहिस्ता मोर्फ के करीब आ रही है। मोर्फ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये जो ग्रेनेड्स आ रहे हैं ये उनकी एलिमिनेशन का बाइस बन सकते हैं और बैकएंड से जब उनके 2 प्लेयर्स चुपके उनके करीब आ रहे हैं फजर आप सिर्फ रियलाइज करते हैं ग्रेनेड उनकी तरफ से भी कुछ किया जाएगा, ये एक अच्छा ग्रेनेड साबित हो सकता है, लेकिन कैंसिल करते हैं। इंतजार करिए, वो ज़ाया नहीं करना चाहते किसी भी यूटिलिटी को। ही वांट्स टू मेक इट काउंट। वो चाहते हैं कि ग्रेनेड जब जाए तो एक नॉक भी निकल कर आए क्योंकि उनके पास शायद ज़्यादा यूटिलिटीज मौजूद नहीं है। लेकिन चले फिलहाल 3v2 सिचुएशन बन चुका है। स्टी को स्मोक्स की अशद जरूरत है, अगर उनके पास स्मोक्स ना हुए तो फिर खतरा उनके लिए लाक हो सकता है। सामने एक ब्रोकन व्हीकल भी है जिसके ऊपर वो जा सकते हैं, लेकिन स्मोक उसके लिए भी उनको डिप्लॉय करना पड़ेगा। यहाँ पर सिचुएशन इस वक्त जो है वो फेवर में टीम मॉर्फ के जरूर है क्योंकि उनके पास प्लेयर ज़्यादा है। ग्रेनेड्स भी महंगे ज़्यादा है उनकी तरफ से, नॉक निकाला जाएगा मॉर्फ के फजर की तरफ से। Talking about he wants to make it count. RSC to decide पे निकालते हुए ST के 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। आखिरी प्लेयर स्काई जिंदा है और अब इस वक्त सारी जिम्मेदारी स्काई के कंधों पर आ चुकी है। स्काई हैज टू डू समथिंग अमेजिंग क्योंकि यहाँ पर उनको ना सिर्फ रिवाइव देना बल्कि अपनी टीम को जिंदा रखना पड़ेगा। पत्थर का कवर उनके पास है लेकिन सर्कल उनके पास मौजूद नहीं। 64 मीटर उनको सर्कल पे जाना है। सामने RSC मौजूद, मॉर्फ के प्लेयर्स भी जिंदा जावेद नजर आते हुए हमें इस वक्त। मॉर्फ के पास कवर मौजूद, सर्कल मौजूद, हर चीज उनके पास है। मैन एडवांटेज सिर्फ नहीं है लेकिन वहीं पर यहाँ पर जिस तरह से वो खेल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉर्फ चिकन लेकर जा सकते हैं, लेकिन आरएससी फिलहाल अपने प्लेयर्स को रिवाइव देते हुए डीडी रिवाइव हो चुके हैं। स्काई इज गोइंग फॉर द हील बैटल बट ही इट्स ओनली और यहां पर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। ओपन में उनको आना पड़ेगा लेकिन ओपन में आते आते स्पॉट हो जाएंगे और लाइटनिंग यहां पर उनका काम तमाम करते हुए। आरएससी की अब सारी अटेंशन टीम मोर्फ के ऊपर आने वाली है। यहां पर अब सिलसिला बदलता हुआ मोर्फ के पास जो एडवांटेज था वो डिसएडवांटेज में तब्दील होता हुआ अब आरएससी इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। अगेन इट्स 3v2 सिचुएशन और प्लेयर्स अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं। एक दफा फिर से पेट्रोल पंप के आउटसाइड के ऊपर जाते हुए एक प्लेयर हमें नजर आए। एनपीओवी के अंदर देखा जा रहा है कि जिस साइड के ऊपर मॉर्फ के प्लेयर्स देख रहे हैं वो साइड नहीं है जिसके ऊपर आरएसजी के प्लेयर्स मौजूद हैं। लाइटनिंग आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग करेंगे लेकिन लाइटनिंग जिस एंगल से पुश करने की कोशिश करे काफ़ी एक ओपन एंगल है और अगेन ज़्यादा कुछ कवर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कवर जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकता ये एरिया पेट्रोल पंप का, पेट्रोल स्टेशन का। लेकिन स्मोक्स किए जाते हैं, बेहतरीन स्मोक्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं यहाँ पर। रॉकी और फजर दोनों जो है वो इस छोटी टक शॉप का एरिया जो होता है किसी पंप के ऊपर वहाँ से बाहर आ चुके हैं एंड दे नो के अंदर रहना जो है वो काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एजेस के ऊपर आउटसाइड के ऊपर एक नेड थ्रो किया जाता है जस्ट टू जो साउंड क्यूज हैं उनको थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए क्लोजिंग कर सकती है यहाँ से आरएसजी। लेकिन सर्कल अभी तक के लिए मॉर्फ को थोड़ी देर के अंदर पुश करने वाला है। 33 मीटर्स उनको सर्कल के अंदर जा रहे हैं। आरएसजी के पास सर्कल का एडवांटेज यहाँ पर रहने वाला है लेकिन फजर स्टिल वेटिंग। बिल्कुल बेहतरीन जो है वो यहाँ पर एंगल होल्ड किया जा रहा है और वेट कर रहे हैं कि आरएसजी के प्लेयर कोई गलती करें और उनको पनिश किया जाए दोनों साइड्स के ऊपर। रॉकी इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक प्लेयर कोने से पीक करेगा, डीडी वहाँ से पॉसिबली पीक कर सकते हैं लेकिन रॉकी एकदम अपना पीओवी चेंज करते हुए नाउ ही इज वाचिंग समवेयर एल्स।
और लेकिन आनेस्टली को शायद अंदाज़ा है कि दोनों प्लेयर्स बैक साइड पे ही मौजूद होंगे क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड के अंदर है ना ग्रेनेड्स क्योंकि काफ़ी वो कर चुके हैं और अब शायद यूटिलिटीज़ भी इनके पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर मॉर्फ अगर वापस कवर में चले जाती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एडवांटेजेस साबित होगा क्योंकि अब ग्रेनेड्स खत्म हो चुके हैं दोनों टीम्स के पास, अब यूटिलिटीज़ मौजूद नहीं है। लाइटनिंग पिक देंगे, गलती की जाती है लेकिन यहाँ पर डील करते हुए नाउ इट्स 1v3 और फजर अकेले प्लेयर मौजूद, मॉर्फ वर्सेस टीम आरएससी। क्या यहाँ पर किल दिया जाएगा? नहीं, किल डिनाई किया जाता है। आरएससी गेट्स द चिकन डिनर फॉर देमसेल्व्स। तो गाइस चिकन डिनर आता हुआ यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से मिलेंगे आपसे फिर थोड़ी देर में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भाई साहब फ्रेंड्स को शेयर करिए। चिकन डिनर की तरफ ये टीम आती हुई, दिस इज द रीजन व्हाई दे won पीसकीपर एलीट चैंपियनशिप के जो चैंपियंस हैं वो यहाँ पर साबित करते हुए कि किस तरह से उन्होंने वहाँ डोमिनेट किया था। एक वुल्फ टीम का जो है वो एक Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. फिर आ जाता वहाँ एक जीत चुकी ऑलरेडी। Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold.
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing.